Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. Today, we are going to start our chapter 4, which is animation with StackZ. And in this chapter, we will be going to learn about how to create animations using StackZ. So, without wasting any further time, let's start it. The name of a chapter is Animation with StackZ, and we have an activity which says write the name of your two favorite animated movies in the given space. तो यहाँ पे आपको अपनी कोई भी दो फेवरेट एनिमेटेड मूवीज लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल हमारी अभी एक लेटेस्ट मूवी आई है which is animated Mufasa, and the next one you will write on your own. Now in this chapter we will learn about the first multi-platform stick figure animation program which is StykeZ. Now ये एक free multi-platform stick figure animation program है. Now we will study कि हम उसको start कैसे करते हैं. सबसे पहले we will be clicking on start button, then we will click on all apps in the left pane and we will scroll down till the letter S. Now a list of programs appears. वहां से हम क्लिक करेंगे टाइप Z ऑप्शन पे. एक वेलकम सेंटर अपीयर हो जाएगा ऑन आवर डेस्कटॉप एंड इट हैज डिफरेंट सेक्शंस टू वर्क इन टाइप Z. नाउ हम ओपन कर सकते हैं रिसेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दिस सेक्शन और हम क्रिएट कर सकते हैं कोई न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस सेक्शन. यू कैन गेट हेल्प एंड अदर ट्यूटोरियल्स फ्रॉम दीज सेक्शंस. हम क्लिक कर सकते हैं एग्जिट पे टू क्लोज द वेलकम सेंटर. अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे. तो व्हाट वी विल डू इज लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेलकम सेंटर जो है वो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स. नाउ यहाँ पे जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है it will close the welcome center and create new untitled document based on the settings specified. तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या करता है, इट विल क्लोज द वेलकम सेंटर और वो हमारे लिए एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है दैट इज कंप्लीटली ब्लैंक. Then from our stykz.styk file, it will bring up a file section. ये हमारे लिए एक file section लेके आएगा dialog box that will let us select a saved stykz figure file which is .styk. Now when we do so, जो वेलकम सेंटर है वो क्लोज हो जाएगा एंड न्यू अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट विल ओपन विद द फिगर जो हम सिलेक्ट करते हैं ऑलरेडी डिस्प्लेड ऑन दी स्टेज. नाउ फ्रॉम अ pivot.stack फाइल, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारे लिए फाइल सेक्शन डायलॉग बॉक्स लेके आता है that will let us select a pivot stick figure file which is .stack and in other pivot 2.x or pivot 3.x formats. नाउ हमारे स्टैक विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. दिस इज आवर स्टैक विंडो एंड यहाँ पे वी हैव टूल्स पैलेट, प्रॉपर्टीज पैलेट, कमांड्स पैलेट, कंट्रोलर पैलेट, वी हैव फ्रेम्स पैलेट, स्टेज एंड स्टिक फिगर. तो टूल्स पैलेट क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है 5 टूल्स जो हेल्प करता है हमारी टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट सेगमेंट्स, नोड्स एंड फिगर इन StykeZ. देन वी हैव स्टिक फिगर, ये जो है इसको हम स्टिकमैन भी बोलते हैं. ये बहुत सिंपल ड्राइंग है फॉर अ पर्सन और एन एनिमल and composed of few lines, curves and dots. Then we have stage, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट और मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने फिगर्स को एंड अदर एलिमेंट्स ऑन द स्टेज. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज पैलेट, ये अलाउ करता है हमें टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीथिंग इन StykeZ एप्लीकेशन. फ्रेम्स पैलेट जो होता है इसको हम यूज करते हैं टू व्यू एंड नेविगेट डिफरेंट फ्रेम्स. व्हेन वी क्लिक ऑन एनी फ्रेम इन द पैलेट इट विल टेक अस टू दैट फ्रेम इन आवर डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे हम पुट करते हैं रेड बॉर्डर अराउंड द फ्रेम थंबनेल इमेज. कंट्रोलर पैलेट जो होता है इसको यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द प्लेबैक ऑफ एनिमेशन इन StykeZ. कमांड्स पैलेट ये अलाउ करता है हमें टू क्रिएट आवर ओन कस्टम बटन्स इन द पैलेट जो हेल्प करते हैं इन मेकिंग द एनिमेशंस फास्टर एंड easier. एनिमेटिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को एनिमेट कराना है तो व्हाट वी विल डू, एनिमेशन एक सीरीज होता है ऑफ स्टिल इमेजेस जो डिस्प्ले किया जाता है इन अ क्विक सीक्वेंस. तो टू क्रिएट एनिमेशन इन StykeZ हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट टूल पे, देन वी विल क्लिक ऑन द ड्रैग नोड व्हिच इज येलो सर्कल एंड टू ड्रैग द फिगर ऑन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज. नाउ जब हम ड्रैग करेंगे तो जो थंबनेल है स्टेज का इन द करंट फ्रेम विल आल्सो गेट अपडेटेड. देन हम क्लिक करेंगे न्यू फ्रेम बटन पे टू क्रिएट अ न्यू फ्रेम. एक न्यू थंबनेल अपीयर हो जाएगा इन द फ्रेम पैलेट विद रेड बॉर्डर लाइक दिस. नाउ क्लिक ऑन ड्रैग नोड एंड ड्रैग द फिगर टू द राइट ऑन द स्टेज. एज वी ड्रैग द ग्रे फिगर ऑफ द प्रीवियस फ्रेम इज डिस्प्लेड और इसको हम बोलते हैं ऑनियन स्किन.
नाउ हम क्लिक करेंगे न्यू फ्रेम बटन पे टू क्रिएट अ न्यू फ्रेम। एक न्यू थंबनेल अपीयर हो जाएगा इन फ्रेम्स पैलेट विद रेड बॉर्डर लाइक दिस। नाउ हम क्लिक करेंगे रेड सर्कल पे विच इज पाइवट नोड एंड रोटेट करेंगे उसको अपवर्ड्स। जो ग्रे फिगर है ऑफ द प्रीवियस फ्रेम वो विजिबल होगी। हमें रिपीट करना है स्टेप 5 एंड 6 टू ऐड मोर फ्रेम्स एंड चेंज द पोजीशन ऑफ द फिगर। नेक्स्ट इज प्लेइंग द एनिमेशन। एनिमेशन क्रिएट करने के बाद में उसको प्ले कैसे करना है। तो फॉर दैट द स्टेप 1 इज हम क्लिक करेंगे प्ले बटन पे इन द कंट्रोलर पैलेट। देन जो एनिमेशन है इट विल प्ले फॉर वन टाइम इन अ न्यू विंडो जिसको हम बोलते हैं StackZ प्लेयर। देन हम क्लिक करेंगे लूप बटन पे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द प्ले बटन टू प्ले द एनिमेशन अगेन एंड अगेन। नाउ जो एनिमेशन है इट स्टार्ट्स प्लेइंग नॉन स्टॉप इन द StackZ प्लेयर विंडो। Click on pause button to stop the animation. सेविंग द एनिमेशन, इसके लिए हम क्लिक करेंगे फाइल पे देन सेव ऑप्शन। तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। टाइप द नेम ऑफ द फाइल, फिर हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो एनिमेशन है इट विल बी सेव्ड विद द .stackz फाइल एक्सटेंशन। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। StackZ एक फ्री मल्टी प्लेटफॉर्म स्टिक फिगर एनिमेशन प्रोग्राम है। स्टिक फिगर इज नोन एज स्टिकमैन। फ्रेम्स पैलेट को यूज किया जाता है टू व्यू एंड नेविगेट डिफरेंट फ्रेम्स। कंट्रोलर पैलेट को यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द प्लेबैक ऑफ एनिमेशन इन StackZ। एनिमेशन एक सीरीज है ऑफ स्टिल इमेजेस displayed in a quick sequence. Let's do the exercise. Dash palette allows us to create our own custom buttons in the palette. Command. Dash command is used for saving the animation. Save. Which program is used to create an animation program? StackZ. Next is fill in the blanks. Dash is a series of still images displayed in a quick sequence. Animation. Here are Dash tools and tool palette. 5. Stick figure is also known as Stickman. And Dash is used to view and navigate different frames. Frame palette. Next is true false. Drag node is red circle that is used to drag the stick figure. True. We cannot save the animation file in StackZ. False. StackZ is a stick figure animation program. True. So students, this was a complete chapter about animation with StackZ. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye.